So this six prostaglandins biosynthesis we will be learning in this today's class. But A, B, and C will not be learning it because their synthesis is something different ways are there, different mechanisms are there. So those we will not be studying, but we will be studying these six prostaglandins biosynthesis. So for biosynthesis of this prostaglandins, we require fatty acids. यहाँ पे हमारे पास 20 कार्बन का चेन है prostaglandin. So our starting material should also have 20 carbon. And as such, yesterday we had seen कि 20 कार्बन का जो fatty acid है, वो हमारा arachidonic acid है. So this will be our starting point, arachidonic acid. To make it first series, second series, and third series, we also name this arachidonic acid into different ways. One is a ecosa, trienoic acid, tetraenoic acid, and pentaenoic acid, depending on how many double bonds it has. So we have it here as a ecosa, trienoic acid. This is our starting fatty acid, ecosa trienoic acid, as the name triene. So triene means it has 3 double bonds, and those 3 double bonds will be present at 4. So these 3 double bonds we can nomenclate as 5, 8, 11 as the 3 double bonds that are present in ecosa trienoic acid. So this is also one type of nomenclature. यहाँ पे डेल्टा और उसके ऊपर में सब सुपरस्क्रिप्ट में हम नंबर्स लिख सकते हैं कि कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड्स है. So this will be our ecosa trienoic acid. This will give rise to one series of prostaglandins. One series of prostaglandins, that is prostaglandins containing one double bond. यहाँ पे जो 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 3 में से 2 डबल बॉन्ड्स हमारे हमेशा साइक्लोपेंटेन रिंग बनाने में काम में आते हैं. तो बाकी का जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स बचते हैं वो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन में रहते हैं. That becomes a part of the prostaglandin. So that will be our यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो 2 डबल बॉन्ड्स हमारे साइक्लोपेंटेन रिंग में जाएंगे, एक बचेगा. सो इट विल गिव राइज टू वन सीरीज. दूसरा होता है डेल्टा 5, 8, 11 and 14 ecosa tetraenoic acid. Ecosa tetraenoic acid. This is also called as arachidonic acid. This ecosa trienoic acid, we call this as a gamma levulonic dihomo gamma linolenic acid. This we also call it as dihomo gamma linolenic acid, while this is also called as arachidonic acid. Arachidonic acid, and it gives rise to 2 series of prostaglandins. Because here there are 4 double bonds are present. These out of 4, 2 will be going for cyclopentane, और बाकी के जो 2 बच जाते हैं वो हमारे इसमें काम में आते हैं. They are retained in the side chains. So another series is 5 delta 5, 8, 11, 14 and 17 ecosa pentaenoic acid. This will be giving rise to third series of prostaglandins. So ecosa trienoic acid से first series, tetraenoic acid से second series, and pentaenoic acid से third series of prostaglandins हमको मिलते हैं. As it is arachidonic acid, it will have 20 carbon atoms. We can write those 20 carbon atoms, and this all the 4 double bonds are in cis conformation. So this will be our this will be 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 carbon, 9, 10, 11 carbon. This will be 12, 5. This is 4, 3, 2, 1. So we will have at one position COH group. Number of carbons यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है.
1, 2, 3, 4, 5. 5 पे एक cis double bond. 6, 7, 8. 8 पर एक और cis double bond. 9, 10, 11 and 12. 11 position पे और एक cis double bond. Then we have at 14th position another cis double bond. So this 13, 14. 14th position for और एक cis double bond. Then 15, 16, 17, 18, 19 and 20. 20 पे CH3. This becomes our arachidonic acid or delta 5, 8, 11, 14 ecosa tetraenoic acid. This reacts with oxygen in presence of monooxygenase or cyclooxygenase enzymes. Monooxygenase or cyclooxygenase enzyme. We also call it as COX enzyme. So in presence of this COX enzyme, O2 will react with this 9 and 10 position. So for that, what we have is, we have an oxygen molecule. This oxygen molecule here at we have two hydrogens. So those two hydrogens, amongst them one will be extracted as an hydrogen atom homolytically. Homolytic cleavage will happen so that the electron relays to this 12, 13 carbon, and these electrons is now transferred to the oxygen, so that the another oxygen will then gain one electron. So it becomes a O dot. So it becomes a peroxide radical. Now we will have this as a COOH. Then we have this as a CH3. Here we have a O dot, and we have a double bond over here. ये समझ में आया? We have just added oxygen molecule at 11th carbon by extracting the proton, by extracting the hydrogen atom here through homolytic cleavage. So यहाँ से double bond between 12, 13 बनेगा. So this double bond will be generated. This is new double bond that we have made it. From here it has shifted to the neighboring carbon atom. तो यहाँ पे जो cyclic peroxide जो बना है, this cyclic peroxide will then attach to this carbon, and as it attached to this carbon, यहाँ के जो electrons हैं वो यहाँ पे shift होते हैं. So it will be 1, 2, 3, 4 and 5 membered ring बनेगा. बराबर? So that what happens is as this electron shifts over here, this electrons will be shifting towards this side, and as this shifts here, यहाँ के जो electrons हैं वो बाहर आते हैं, and it reacts with another oxygen molecule. It reacts with another oxygen molecule और यहाँ पे peroxide generate होगा. यहाँ का एक peroxide radical था, यहाँ पर वापस से एक दूसरा peroxide radical generate होगा, लेकिन ये radical यहाँ पे quench हो जाएगा. So we will have another O2 in presence of COX. O2 in presence of COX enzyme. We will have this. Here what we have is, यहाँ पर हमारा ये 5th कार्बन था, ये 6, 7, 8, 9, 10, this is 11, 12, 13, 14, 15 and then rest of it. तो यहाँ पर 8 और 12 के बीच में बॉन्ड बनता है. 8 और 12 के बीच में बॉन्ड बनता है. So we will have this as a, so this is our 8th carbon and this is our 12th. This bond has been made, and what we have is peroxide, cyclic peroxide with 9 and 11 carbons. So we will have here as a cyclic peroxide at 9th position and this at 11th. This is our 9, 10 and 11. So 9 and 11 position will have a cyclic peroxide. 8 carbon को यहाँ पे हमने join किया. Then we will have a 7, we will have a 6th double bonded with 5th,
4 3 2 1 that is COH। यहाँ पे 12 के बाद में 13th कार्बन आएगा, that 13th कार्बन will have 13 and 14 will be now double bond because यहाँ पे भी ये double bond shift हुआ इधर, तो 13 14 पर double bond आएगा। Then we have a 15th carbon which is having a acyclic peroxide. That radical will get quenched with the acyclic peroxide. So 15, यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20. 20th carbon पे हमारा methyl group. So this will be obtained. This belongs to, as if you remember it, it is a PGG. This PGG में यहाँ पे double bond at 5 position पे and double bond at 13 position पे. तो दो double bonds होने की वजह से ये हमारा PGG2 होता है। So we have PGG2 from arachidonic acid in 2 steps. We had 2 peroxides. PGG2 can undergo hydrolysis reaction. So it will be undergoing hydrolysis reaction in presence of peroxidase enzyme. Peroxidase enzyme में हमारा ये जो acyclic peroxide है, it will get hydrolyzed और cleavage of acyclic peroxide will happen. Cleavage of acyclic peroxide will result into formation of compound containing a 7 6 5 4 3 2 1 carbons will be 13 14 15 16 17 18 19 and 20 और यहाँ पर एक OH होगा। अभी पहले यहाँ पर peroxide था, now it becomes a OH. This belongs to PGH series and यहाँ पे दो double bonds हैं, so it will be PGH2. एक cyclic peroxide रहेगा, acyclic peroxide का cleavage हो जाएगा, so we will have this with a PGH2. So it contains only a cyclic peroxide and does not have a acyclic peroxide. Then this cyclic peroxide can undergo cleavage or opening of the cyclic peroxide can happen via homolytic cleavage. So we can have an opening of cyclic peroxide via homolytic cleavage. This gives rise to radical formation or diradical formation will be happening. So we will get diradicals and that will be a 5-membered ring with one oxygen containing a radical over here. यहाँ पे ये bond break होगा, तो ये bond break होगा homolytically, so electron इसका इधर जाएगा और इसका electron इधर आएगा. तो ये ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, so it will belong to here, और ये ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो यहाँ पर 11th पोजीशन पर आएंगे. So we will have one oxygen over here with a radical and the rest of the things will remain same. ये जो डायरेडिकल बनता है, ये डायरेडिकल now it gives rise to all the other 4 types of prostaglandins, that is the D, E, F and I. All 4 we can get it from this diradical depending on how the quenching happens. If 2 hydrogen atoms are added, if 2 hydrogen atoms are added, one at each of these oxygen radicals, then we will get, here we will have a OH और यहाँ पर भी OH and
यहाँ पर दोनों OH है एट 9 एंड 11 पोजीशन पे, दोनों पे OH है, सो इट बिकम्स PGF सीरीज। दो डबल बॉन्ड्स हैं, सो PGF2, और यहाँ पे 9th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन है, सो इट इज अल्फा। So PGF2 alpha, we will get this compound. Then we can have addition of one hydrogen atom followed by removal of one hydrogen atom. Addition of one hydrogen atom and removal of one hydrogen atom. So that can give rise to two different things. कि कहाँ से एडिशन होगा और कहाँ पर रिमूवल होगा। यहाँ पे हमारे पास दो ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं, इसमें से एक में एडिशन हो और दूसरे में रिमूवल हो हाइड्रोजन एटम्स। सो ऐसा कुछ होता है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। अगर यहाँ पे एडिशन होता है और यहाँ से रिमूवल होता है तो एक बनेगा, दूसरा यहाँ पे रिमूवल होता है और यहाँ एडिशन होता है तो दूसरा बनेगा। सो इन दैट केसेस वी हैव टू थिंग्स, वन विल बी, अगर हमारे पास यहाँ पे रिमूवल होता है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, वैसे ही यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम है। सो दिस कैन बी दिस हाइड्रोजन एटम इफ इट इज रिमूव्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे अंदर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बोनिल होगा। और यहाँ पर एक एडिशन होता है हाइड्रोजन एटम का, तो वी विल हैव ए OH। This will be PGE सीरीज, और यहाँ पे उसमें दो डबल बॉन्ड्स है, सो PGE2, और यहाँ पर 9th कार्बन पे कार्बोनिल है, सो इट इज नॉट हैविंग एनी स्टीरियोकेमिस्ट्री, सो नो अल्फा बीटा हो गया। यहाँ पे दूसरा होता है कि अगर यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ पे एडिशन होता है, तो यहाँ पे कार्बोनिल बनेगा, एट 11th कार्बन पे हमारा कार्बोनिल बनेगा और 9th कार्बन पे हमारा OH बनेगा। तो दैट विल बी गिविंग राइज टू, यहाँ पर हमारा OH होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा 11th कार्बन पे, एंड वी हैव रेस्ट ऑफ द साइड चेन्स एज इट इज। दिस इज आवर PGD फैमिली, और यहाँ पर 9th कार्बन पे डॉटेड बॉन्ड है, मींस बिलो द प्लेन है, एंड देयर आर टू डबल बॉन्ड्स, सो टू डबल बॉन्ड्स का 2 एंड बिलो द प्लेन का अल्फा, सो PGD2 अल्फा। So we get PGD2 alpha over here. This is how we have synthesized. First G बनाया था हमने, फिर H बनाया, फिर ये D, E and F. Now we are remaining with I. I सीरीज में क्या होगा, यहाँ पर ये जो रेडिकल है, दिस रेडिकल रिएक्ट्स विथ दिस, क्या होगा, this radical reacts with this carbon. So that we will have 1, 2, 3, 4 and 5 membered ring. So we will have a total 5 membered ring यहाँ पर भी बनेगी. So that 5 membered ring will be somewhat ये हमारा ओरिजिनल जो 5 membered ring है, एंड यहाँ का जो 9th कार्बन का जो ऑक्सीजन था, और यहाँ पे 5th कार्बन का ये जो 8th कार्बन का जो वी हैव 1 and 2 कार्बन्स। तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज सेम रहेगा, यहाँ पर एक, so this will be forming a bond, new bond will be formed between this carbon and here. We will have a radical generated over here, that is at 5th carbon we will have a radical generated, 4, 3, 2 and 1 will be having a COOH group.
बाकी सारी moieties में जैसा था वैसा ही रहेगा. So this is our 9th carbon, this is 8th carbon, ये 9th carbon, 10 and 11. 11th carbon पे हमारा quenching होगा, तो वहां पर हमें OH मिलेगा. एंड जो 12th कार्बन है, दिस इज 11, और यहाँ पे हमारा 12th कार्बन पे जैसा साइड चेन था पहले वही रहेगा, R2 साइड चेन. So this radical we will be generating. Now this radical can take up a hydrogen from here, hydrogen atom from here, so that a double bond will be generated. It will be loss of hydrogen atom, and we will have double bond here. Then this is it, 4, 3, 2 and 1. यहाँ पर हमारा COOH ग्रुप बनेगा, and we will have एक साइड चेन. यहाँ पर हमारा R2 का साइड चेन रहेगा, OH, and here we will have another OH at 11. This becomes PGI, और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स हैं, so it will be PGI2.